Hello, dear friends. Today we are going to discuss organizational behavior, and today we will cover the definition of organizational behavior, and we will explain the importance of organizational behavior uh, for managers, and we will develop understanding of functions of a manager and managerial roles. So let's forward. Now we are going to talk about the definition of organizational behavior. What is organizational behavior? Organizational behavior is the study of human behavior within an organization. You have to remember within an organization. Within an organization. Where do we focus on? We focus on individual behavior, we focus on group behavior, and then we go for the organizational level behavior. Uh, we can understand it uh, this thing. This is individual, this is group, and this is organization. This is known as micro manage. This one is known as meso, and the last one is known as macro. This one is known as macro. Is that clear? So, uh, we will be when we analyze organizational behavior, we analyze it in a sequence. At first, we go for the individual behavior, then we go for the group behavior, and later we forward to the organizational behavior. Is that clear? Now we are going to understand the scope of organizational behavior. It investigates it investigates cognitive, affective, and behavioral aspects of employee. Three things: cognitive aspect, affective aspects, and behavioral aspects. And answers what motivates an employee, what makes a manager effective, and how to manage group dynamics. Is that clear now? Let's go forward. The importance of organizational behavior. It enhances organization's effectiveness. Effectiveness. Now we will go for understanding that why is it important. So it equips managers to handle challenges. What are the challenges? Workforce diversity, globalization, and many more other things which are happening time to time into the business. And opportunities because of openness. क्योंकि एक organization, what is an organization? Organization is open towards the change which are happening into the environment. Is that clear? Now, innovation, team spirit, team building, all these things are being done.
Let's go forward. Now, the person comes into the scene is Stephen Robbins. What did he say? Organizational behavior is a field of study that investigates the impact that group, and individual, group, and structure have on behavior within the organization to apply such knowledge towards improving an organization's effectiveness. This definition was given by Stephen Robbins. So, how do we see it? So, we are going to make what happened? Okay, now it's working. Organizational behavior. So, what does it say? Does it study? I'm going to write again individual, individual level of study. Then it is going to study groups. Then it is going to analyze structure. Robbins says structure, not organization. Is that clear? So it is the only difference. Uh, Now we are going to forward. Labels of analysis and organizational behavior. We have already discussed enough about that. So we will forward. Individual level of organization, group level, organizational level. Here we analyze personality, motivation, and perception at individual level. Teamwork, communication, and leadership, we are talking about them. And then we comes to structure, change management, etc. Now we'll group level. What does the group level do? Group level analyzes teamwork, okay. Now, teamwork. Other thing is communication, and the third one, leadership. Is that clear? Now we are going to talk about teamwork involves collaboration, coordination, mutual support among the team members. Effective teams have clear goals, trust, and shared goals. What do effective teams have? An effective team have clear roles, trust, and shared goals. Is that clear? Communication, the exchange of information within and between groups. It includes verbal, non-verbal,
written form, and is critical for clarity, conflict, conflict resolution, and coordination. Why is it needed? Why clear communication is needed? So communication is of two types: verbal and non-verbal. Verbal is of two types: oral and written. But non-verbal is very clearly neither oral nor written. It is uh, the signs. Let's understand it. So I hope it is clear. Now we are going to talk about the leadership, the ability to influence, guide individual or group. It is known as leadership, and leadership can be of two types. Leadership can be of two types. What are the types of leadership? Oh, one is transformational, and the other is transactional. Other one is, and next uh, one is organizational level of behavior. So at first we will talk about the culture, the shared value, belief, and norms. They are known as culture. What thing? The shared value, belief, norms that influence how work gets done. A strong culture aligns employees and foster commitment. Positive work culture helps to foster the productivity. And now we comes to structure. What is the structure? The formal arrangement of roles, responsibilities, and authority. It can be hierarchical, flat, flat and mixed. हायरार्की में ऊपर कोई है, सीईओ मान लीजिए, फिर वीपीज मान लीजिए, फिर बिजनेस मैनेजर मान लीजिए, फिर टीम लीड मान लीजिए. ये क्या है? ये हायरार्की में है. लेकिन यहीं पे दो डिपार्टमेंट्स हैं और दो बिजनेस मैनेजर्स हैं. तो ये कैसा हो गया? फ्लैट हो गया.
मैट्रिक्स का मतलब क्या है? अब इनके नीचे भी, इसके नीचे अलग है, इसके नीचे अलग टीएल है, ये मैट्रिक्स हो जाएगा। इज दैट क्लियर? एंड अफेक्ट कम्युनिकेशन फ्लो एंड डिसीजन मेकिंग। क्या करते हैं ये? कम्युनिकेशन का जो फ्लो है, यहाँ पे क्या है? ये कम्युनिकेशन का फ्लो अप डाउनवर्ड्स है, यहाँ पे ऑन द सेम स्टेज है, फ्लैट है। यहाँ पे मैट्रिक है, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया। इज दैट क्लियर? नाउ वी आर गोइंग फॉर द चेंज मैनेजमेंट. What is change management? The process of guiding organizational transformation. It includes planning, communication, managing resistance to ensure the successful adaptation to new strategies or environment. It is known as change management. एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं, एक कंपनी एबीसी है जो अब तक एक सॉफ्टवेयर यूज करती थी, जिस सॉफ्टवेयर का वर्जन था 1.5। अब इस सॉफ्टवेयर कंपनी ने नया वर्जन लॉन्च किया है जो है 1.6, और इसमें बहुत से नए फीचर्स हैं जो नया चेंज लेके आए हैं। तो अब एबीसी को अपने एम्प्लॉयज को इस तरह से चेंज के लिए उस चेंज के लिए तैयार करना हो, उस तरीके से प्लान करना हो, उस तरीके से कम्युनिकेट करना होगा, उस तरीके से उस रेजिस्टेंस जो बन गई है कि नए सिस्टम पर नहीं जा पा रहे हैं, उसके लिए काम करना होगा और अपने एम्प्लॉयज को तैयार करना होगा कि वो इस 1.6 पे काम कर पाए। नाउ इज इट ओके? वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। एक बार फिर से समरी में समझ लेते हैं जल्दी से। कल्चर, जो शेयर्ड बिलीव्स हैं हम लोगों के, और वैल्यूज हैं, नॉर्म्स हैं, ये सब आपके कल्चर में आते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी का जो अरेंजमेंट है उसको स्ट्रक्चर कहा जाता है। वो हायरार्किकल हो सकता है, फ्लैट हो सकता है, मैट्रिक्स हो सकता है। इसके बारे में अभी हम आगे और भी डिटेल में बात करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग, दैट इज चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट मैंने आपको समझा दिया है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक एग्जांपल, एक कहानी है जहाँ पे एक प्रिया है। प्रिया क्या है? माइंड स्पार्क की सीईओ है, मतलब वो हायरार्की में सबसे ऊपर है। उसने नोटिस किया है कि उसकी टीम का परफॉर्मेंस लगातार क्या हो रहा है? वो गिरता चला जा रहा है। पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, ये डे है, यहाँ डे है, ये परफॉर्मेंस है। तो फर्स्ट वीक में यहाँ परफॉर्मेंस था, सेकंड मंथ ले लीजिए, फर्स्ट मंथ में यहाँ था, सेकंड मंथ में यहाँ था, थर्ड मंथ में यहाँ था, फोर्थ मंथ में यहाँ था, फिफ्थ मंथ यहाँ, मतलब परफॉर्मेंस गिरता चला गया। अब इंडिविजुअल लेवल पे उसने देखा कि एक कोडर है जिसका नाम आरव है, जो बहुत डिसएंगेज्ड है। प्रिया को रियलाइज होता है कि उसको लर्निंग पसंद है और वो रूटीन वर्क नहीं करना चाहता है, वो कुछ भी रिपीटेटिव नहीं करना चाहता। तो उसने क्या किया? उसने उसे एक एआई प्रोजेक्ट दे दिया जो जिसने उसको मोटिवेशन में, वापस से उसे मोटिवेट होने में मदद की। ठीक है, नाउ वी कम्स टू द ग्रुप लेवल मैनेजमेंट। ग्रुप लेवल मैनेजमेंट क्या है? द डिजाइन टीम हैज कॉन्फ्लिक्ट्स। अब एक टीम है जो डिजाइन करती है सॉफ्टवेयर्स को, डिजाइन करने वाली टीम। प्रिया क्या करती है?
उनके रोल क्लेरिफाई करती है, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करती है, और मीरा को एज अ टीम लीड हायरार्की में खड़ा करती है। इससे क्या होता है, जो ग्रुप लेवल है उस पर हार्मनी आती है, मतलब सब आपस में बेहतर तरीके से काम करना शुरू करते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की बात करें तो जो कंपनी है उसमें डायरेक्शन की कमी थी। प्रिया ने क्लियर क्लियर कल्चर और स्ट्रक्चर को फ्लैटन किया और स्मूथ शिफ्ट और हाइब्रिड वर्क और टू हाइब्रिड वर्क इंट्रोड्यूस। उसने कहा जिसको वर्क फ्रॉम होम करना है वर्क फ्रॉम होम कर सकता है, जिसको 2 days ऑफिस और 3 days वर्क फ्रॉम होम करना है वो ऐसे कर सकता है, 3-2 कर सकता है, जो भी जैसे चाहे। इससे क्या हुआ का जो कम ऑर्गेनाइजेशन थी उसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। दैट इज द क्लियर सेंस। Now we are going to move forward. Why to study OV? To understand the formation of organizational behavior as discipline. कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जब मैं एक टर्म ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कह रहा हूं, in that condition we need to understand that I am talking about anthropology, psychology, social psychology, and sociology. Is that clear? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इन तीनों डिसिप्लिन के कॉन्ट्रीब्यूशन से। When they contribute, we are going to get the organizational behavior in the response. And it explores the managerial role and functions, address the modern workplace challenges. What are the modern workplace challenges? Technological change, remote work, employee engagement. All these things are happening. All these things are the modern workplace challenge. Technological challenge, I had already told ABC with the example of software version 1.5 and 1.6. Now, the remote work, I already told that some employees want to do 100% remote work and they uh, don't want to come to office. But some employee want to come to office, they don't want to do work from home. Some want to come to office on 2 days and 3 days they don't want to come. Employee engagement, uh, to manage them, the human resource management. We will talk about that in details on next video. Summary. Organizational behavior is essential for understanding and improving workplace dynamics. It integrates psychology, sociology, and management. Prepares managers to lead effectively in complex environment. किस तरह के environment? Complex environment. उसको survive करने का ताकि वो survive कर सके और फिर perform कर सके. To survive and perform, he will need organizational behavior. I hope still now you are getting this. We will go for what is an organization. So this is the definition of an organization. A social unit is structured and managed to pursue the collective goals. किस तरह के goals? Collective goals. Operates through defined management structure. Structure, purpose, people, and open system. These are the key features of an organization. Defines role, responsibility, authority, and relationship. I already told you.
purpose, vision, mission, goals, and specific objectives. And people, members who work together to achieve the purpose, they are known as people. And open system, it interacts and is influenced by the external environment. दुनिया में जो होगा उसका फर्क इस ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ेगा ही, इसलिए इसे क्या कहेंगे, ओपन सिस्टम कहेंगे. Is that clear? Now we are going to talk about organizational as open system. Organizational Organizations are not isolated. They affect and are affected by economic conditions, social trends, technological changes, legal and political environment. एक एग्जांपल मेरे दिमाग में अभी है, मैं बता देता हूँ. एक कंपनी थी, ड्रीम 111, और हुआ ये कि एक पॉलिसी चेंज आया और पॉलिसी चेंज की वजह से कंपनी बंद हो गई. कंपनी गेट्स. ऑर्गेनाइजेशन पर बाहर से चीजों का फर्क पड़ता है, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम. टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की बात करें तो कई कंपनी ऐसी हैं, नोकिया को एक एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं. नोकिया को नॉट सर्वाइव. सोशल ट्रेंड्स की बात करें तो राजदूत को ले लीजिए. राजदूत स्लोली स्लोली चला गया. इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करें तो कोविड-19 में मार्केट ठप हुआ तो बहुत सी कंपनियां यूं ही पेरिस हो गई. वेरिएशन अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, तो पर्पज और स्ट्रक्चर के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज एंड स्ट्रक्चर, they can vary across and on the basis of industry, size, culture, and strategic goals. Now, forward. And today